I'm a starter and I wish to start a digital marketing agency. And how am I supposed to start? मेरे पास में क्या step 1, 2, 3 मैं करूं जिससे मैं एक successful agency setup कर सकूं? So don't look at yourself as a digital marketer who's running a digital marketing agency. A digital Right. marketer is different than an owner of a digital marketing agency can be different. गर्मी in Right. terms of pressure और धूप in terms of learning, ये दोनों चीजें मिलती हैं. वहां से आपको दो चीजें पता लगेंगी कि मेरे को इसके अंदर मेरे को सब नीश कौन सी चूज करनी है. मैं Right. जो चीज आप नहीं कर सकते हो उसके लिए कोई ना कोई आपको मिल जाएगा. अच्छा, एक बार ऐसा भी हुआ आगे कि मैं वेबिनार कर रहा था, दूसरे दिन की सेकंड हाफ में Hi, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? Hi again, welcome to the AskAviArya show. This is a new series that we've started where we're inviting digital marketers, freelancers, small agencies, yet to become agencies and agencies which have been working for a long time to ask me 7 questions in 20 minutes so that we can help other digital marketers also. So that is it, 7 questions, 20 minutes from you to me, and thank you Ajay for taking your time out. What is your first question? All right. So I'm asking a couple of questions on behalf of the people who are starting the agency, some people who are already in the agency, somebody like me, and maybe, some other things about the agency, people who want to know, more things about it. My first question to you would be, I'm a starter and I wish to start a digital marketing agency. And how am I supposed to start? मेरे पास में क्या step 1, 2, 3 मैं करूं जिससे मैं एक successful agency setup कर सकूं? Awesome, Ajay, great question. So number one thing is I always say, कल भी मैं एक इंटरव्यू पे था जहाँ मैंने बोला कि अगर एजेंसी स्टार्ट करनी है, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हो अपनी लाइफ की जर्नी में, अगर आप ऑलरेडी एजेंसी स्टार्ट कर चुके हो, ऑफिस एरिया है, कुछ खर्चा कर दिया है, को फाउंडर दुकान बना दी है, ऑल ऑफ दैट, इट्स डिफरेंट. बट अगर आप अभी भी सोच रहे हो और आपने कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, द बेस्ट इज टू गेट अ जॉब एट अ गुड एजेंसी where you are able to work closely with either the manager or the founder who you admire. Because what happens is कि जब आप कहते हो कि मैं उस कोच के साथ काम करूंगा, उस ट्रेनर के साथ करूंगा, उस एजेंसी के साथ करूंगा, then आप इनकी छत्र छाया में रहते हो, they give you the sun. और जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि जब सन मिलता है, जब सन की रेस मिलती है, थोड़ी धूप भी मिलती है और थोड़ी गर्मी भी लगती है. तो गर्मी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और धूप इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, ये दोनों चीजें मिलती हैं. वहां से आपको दो चीजें पता लगेंगी कि मेरे को इसके अंदर मेरे को सब नीश कौन सी चूज करनी है, मैं कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं, और दूसरा ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी चीजें प्रॉफिटेबल है और कौन सी नहीं है, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलतियां हैं, पैसे टाइम पे मांगूंगा या मैं कैश फ्लो कैसे चलाऊंगा, 3 महीने 4 महीने के पैसे होने चाहिए. ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू विल नो. सो अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो ये उनको अपना 1, 2, 3 अपने मेंटर की एजेंसी में ढूंढना चाहिए, वहां काम करें. Right. So in a way, I'm learning everything. Like I'm learning, all the possible mistakes I could have made. Right. If I would have started without any experience or without any working experience of an agency. Yes. आपको सीखने के पैसे मिल रहे हैं. Indeed. Fantastic. My question number 2 is, there are a lot of people who are into print media, and why I'm asking this question is because I've also struggled a lot for my transformation from print media to digital media, and I have learned a lot, by doing all the possible mistakes. I was good in tech, but I was not good in digital marketing. There are a lot of people, a lot of my friends who are in a very senior position in marketing, in advertising today also. They are doing a very senior level job, but they understand that their value is not enough anymore. They are not required anymore in the agency. Let's say, for an example, if somebody who's got 20 years of client services experience, an art director who's got 15, 20 years of experience, now they don't know how to transform themselves into digital, because there are a lot of people, there are a lot of youngsters who understand more softwares, understand more tricks than me. Maybe there are a lot of tools available in the market which are overtaking these jobs. So what am I supposed to do if I'm from a conventional agency and now I want to transform myself as a digital guy? Great. अब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. तो ये तो हो गया कन्वेंशनल एजेंसी से डिजिटल मार्केटिंग. मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी भी और फील्ड से भी आके बोलिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है और मुझे एजेंसी स्टार्ट करनी है, मैं सबका आंसर एक साथ दूंगा. All right.
one of the problems or one of the challenges that stops us from starting an agency with this kind of a mindset कि मेरे को तो आता नहीं है tools वगैरह ये वो Google PPC social media SEO मेरे को so the thing is वही मैं आंसर देता हूँ जो मेरे फादर ने मेरे को बहुत साल पहले दिया था जब मैं कोडिंग का प्रोग्राम करने जा रहा था फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा SEO PPC का Google का सर्टिफिकेट देना मैंने शुरू किया था एक लिया था दूसरा ले रहा था तो मैं बहुत स्ट्रेस था उन दिनों और मेरे डैड ने मुझे बोला क्या हुआ तो मैंने कहा कि मेरे ऑफिस में जो लोग हैं मैं चाहता हूँ कि मैं आई शुड बी द बेस्ट आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम मुझे सब आना चाहिए तो उन्होंने बोला नहीं तुम यू नॉट द कैप्टन ऑफ द टीम मैंने कहा आई एम ही सेड नो यू नॉट आई सेड आई एम ही सेड नो यू नॉट तो ऐसे फिर मैं कौन हूँ ही सेड आप कोच हो उस दिन के बाद मेरा नजरिया बदल गया तो सिमिलरली आपके जो फ्रेंड है जो डिफरेंट एजेंसी डिफरेंट बैकग्राउंड से इस एजेंसी में आ रहे they must understand what is the one strength they are bringing to a new startup are they bringing contacts that's enough क्या वो अगर कॉन्टैक्ट से सेल्स आ सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए आपको या तो को-फाउंडर मिल जाएगा या डायरेक्टर मिल जाएगा या कोई और मिल जाएगा कंपनी में सो डोंट लुक एट योरसेल्फ एज अ डिजिटल मार्केटर हु इज रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी a digital marketer is different than an owner of a digital marketing agency can be different over a period of time सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कौन सी चीज आज की डेट में मेरे को बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं आते हैं मेरे को but that's it there are so many youngsters in my team they do all the thing my idea is to get the client getting the client is the most important thing so कोई भी स्टार्टअप करो कुछ भी करो just imagine collaboration से करो लोगों के साथ मिलके करो आज की डेट में co-founders directors बना के चलो and सबकी अपनी strength होती है then you don't feel alone exactly and that brings me to my third question I was an introvert before joining you as well partnering with you coming to a camera like this was a nightmare for me there are a lot of people who are very camera shy who are introvert if I may say so that kind of converts me that I'm not pushes me that I'm not a very good sales guy. Now, if I'm not a good sales guy, and yet I want to start an agency, what should be the case? Hire a good sales guy. So if see the thing is, there are two ways to say, नहीं आप वीडियो के सामने आओ आपको आना पड़ेगा बहुत जरूरी है come on let's do it you can do it अपने बच्चों के बारे में सोचो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो change yourself transform yourself ये सब बातें ठीक है बट वो कल नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते समय लगेगा तब तक क्या करो hire somebody who can do it मेरे बैक में दर्द होती है तो मैं अपना ऑफिस यहाँ मेरे पास ऑफिस क्लीन करने के लिए कोई नहीं है उस दिन मैं निखिल के साथ वर्कआउट कर रहा था तो हम एक वर्कआउट कर रहे थे तो मेरा बैक पूरी तरीके से लोअर बैक और मेरे को ऑफिस ये है कि ये मंदिर है मेरे को रोज साफ करना और जब तक मैं इसको रोज परफेक्टली साफ नहीं करूंगा तब तक मैं इसमें बैठता नहीं तो मैंने क्या किया मैंने फोन किया एंड आई गॉट समबडी टू क्लीन द ऑफिस राइट जो चीज आप नहीं कर सकते हो उसके लिए कोई ना कोई आपको मिल जाएगा अच्छा एक बार ऐसा भी हुआ आगे कि मैं वेबिनार कर रहा था 3 दिन वाले वेबिनार करता था मैं उस दिन दूसरे दिन की सेकेंड हाफ में 12-1 बजे आवाज चली गई कम नहीं हो गई चली गई उसी टाइम मैंने अपने फ्रेंड्स को इतने सारों को फोन किया 1-1.5 घंटे का लेक्चर चाहिए मुझे कोई बंदा मिल गया उन्होंने लेक्चर दिया मैं ऊपर गया और मैंने करारे कर so find somebody all right this I'm just extending this question only कुछ लोगों को ये fear भी होता है कि अगर हम कोई sales का person लेकर आएंगे तो those people will take over the agency or they will take over the clients what is their requirement after that बिल्कुल ठीक बात है ये fear देखिए fear वहाँ होता है जहाँ प्यार होता है मैंने इतनी प्यार से किसी चीज को वो किया कोई लेके जा रहा है तो एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है which is normal now the thing is पहली बात वो हमेशा के लिए कोई आदमी सेल्स नहीं लेके आएगा कोई आएगा तो आप उससे सीख जाओगे यू विल और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को हमेशा के लिए कोई सेल्स में चाहिए और मैंने सेल्स नहीं करनी सो देन दैट मेक दैट पर्सन 3 लेवल होते हैं या तो एसोसिएट डायरेक्टर या डायरेक्टर या को-फाउंडर तीनों में से एक पोजीशन उनको दीजिए फिर वो उनकी कंपनी है आपके पास कोई भी प्रॉफिट आएगा उसका परसेंटेज उनके पास जाएगा साल में बोनस आप घर लेके जाओगे तो वो भी लेके जाएंगे तो उनको अपनी कंपनी का पार्ट बना के उसको इस तरीके से ग्रो कीजिए और उसके बाद एक फियर और होता है अगर वो उसके बाद भी चला गया तो वो तो आज वैलेंटाइंस का दिन है बोलना नहीं चाहिए वो तो पार्टनर भी जा सकते हैं लाइफ पार्टनर anything can be happen that's true so I think we need to be a little more fearless we need to trust people that way the thing is first you have to understand the person is coming from which family means उसकी गरज क्या है मैं जब भी किसी से मिलता हूँ मैंने आज तक सर्टिफिकेट नहीं देखा मैं गरज देखता हूँ
कहता है सर घर पे मॉम के उसके इलाज के पैसे देने हैं, आप भाई को कनाडा भेजना है, पापा को छत मकान पक्की करवानी है, जो भी क्या है आपकी लाइफ में कोई चैलेंज उसके लिए मैं करूँगा। दूसरा, आई विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका नेचर कैसा है, उसका एक वर्क एथिक कैसा है, उसका एक संस्कार कैसे है, उसका कुछ लोग होंगे जो आपको बता के जाए। कोई भी एजेंसी में अगर कोई आदमी बता के जाता है तो यू नेवर एनी ऑफिस, नो एंटरप्रेन्योर हैज अ प्रॉब्लम इफ समबडी सेज मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं 2-3 महीने हैंड ओवर करके चले जाऊंगा, श्योर गो। और जो रातों रात चले जाते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, सर मैं कल से नहीं आऊंगा। तो यू हैव टू फाइंड पीपल हु आर सीनियर, जिनको आप इंसेंटिव दे रहे हो, जिनको आप चीजें दे रहे हो, उनका ध्यान कि मुझे ये लगता है अगर मैं किसी को प्यार करके ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो उसमें लोगों के आपको यू नो सॉर्ट ऑफ नोबडी विल, अगर वो अपनी एजेंसी खोलेगा तो खोलेगा, वो आप उनके साथ पार्टनर भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपका बिजनेस ले जा रहे अनएथिकली तो उसके लिए यू कैन पुट सम चेक्स एंड बैलेंसेस, कमीशंस एंड इंसेंटिव्स एंड एवरीथिंग हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंगली। Right. Cool. Okay. Now, couple of generic questions, and I'm also very curious about these questions, to be very honest with you. One thing which I always, it's keep on bothering me is that, everybody talks about niche. Everybody talks about you cater to a specific market. But when I personally, check it, when I check the top 10 agencies, when I talk about Ogilvy's and, if I talk about Mudras of the world, Lentas of the world, I don't see them any niche in them. If I look at them, maybe I want to become, Ogilvy after 10 years. And yet I have to follow a specific niche because this is what has been advised with many people. So where exactly is the conflict? Where exactly, what is the story? See, the thing is, हम कभी भी किसी भीड़ में जाते हैं, जब हम कोई भी चीज शुरुआत करते हैं, तो हम जब भीड़ में जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ से 100 लोग खड़े हुए हैं, राइट? या बस में, लोकल ट्रेन में आप बॉम्बे में जाते हैं, तो आप अंदर घुसने के लिए आदमी, मैंने देखा एक हाथ अंदर डालता है, ऐसे करके अंदर घुसता है कि मैं घुस जाऊं किसी तरीके से, पहले मेरा हाथ जाएगा ऐसे करके घुस। तो सिमिलरली व्हेन यू गो इनटू स्कूल, आप स्कूल में आपने एडमिशन लिया और बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी ऑलरेडी दोस्ती हुई, आप नए आए हो स्कूल में, तो आप उस सर्कल में घुसने के लिए कहते हो कि यार मैं यहाँ क्या डिफरेंट करूँ जो दूसरे लोग नहीं कर रहे। तो आप कहते हो यार माय नेम इज अजय सिंह, मैं एक पावर एथलीट हूँ, या मैं जिम ट्रेनर हूँ, या मैं यार गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, या मैं कॉन्फिडेंट बड़ा हूँ कि आई कैन टॉक टू द गर्ल्स, और या मैं, तो आप एक अपनी एक स्पेशलिटी लेके आते हो एंड यू आर एक्सेप्टेड कि यार ये दूसरों से अलग है, इसको ये हमारे कम्युनिटी में हेल्प करेगा हमारे को, तो देन यू आर एक्सेप्टेड। सिमिलरली जो मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, इतनी सारी भीड़ के अंदर आपको एक एरो सा बनाना पड़ता है अंदर घुसने के लिए। तो ये जो माइक्रो नीश है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, you need to have some differentiation for people to say that yes, I'm an expert. After that, you will have multiple micro niches. Even Mudra and all of these people, they have different departments. Tourism का अलग है, उसका अलग है, सबकी अलग micro niche है. So start with one micro niche and then have multiple micro niches. And when you have multiple micro niches, you say एक agency है जिसका कोई micro niche, but उनकी multiple micro niches है, and they're not doing general works. हर micro niche का अलग project manager है, अलग understanding है, because what the client is looking for is two things: understanding of digital platforms and understanding of their industry. Now, after a certain time, the other strategy that people follow is, okay, I will have a smart research person. जैसे हमने क्या किया था, हमने कुछ रिसर्च के लोग हायर करे थे, वो वेरी एक्सपेंसिव, बट हमने रिसर्च के लोग हायर करे थे 3 महीने के लिए. They did research on the coaching and training industry, and they told us exactly what they want, courses क्या होने चाहिए, क्या. That Ajay helped us so much to be able to do what we are doing. 1.5 lakh rupees दिए थे उन्होंने per person per month for 50,000 for 3 people for 3 months. तो 4.5 लाख रुपए 3 महीने में. बट जो उन्होंने हमारे कोर्स का और हर चीज का जो उन्होंने जो वो किया था, I totally understood कि मार्केट जा कर रही है. और उसके बाद जब मैंने कोचेस ट्रेनर से बात करा तो my conversion went up. So similarly, या तो you can hire a research partner, research freelancers, Fiverr.com वगैरह पे मिलते हैं, and tell them कि help me research this one industry, tell me the micro niche of this industry, tell me the strengths and weaknesses, tell me the demand, tell me what people are looking for, and then you approach that agency. और like I said, जो मैंने किया इतने सालों से, एक ही एजेंसी, एक ही माइक्रो निश के ऊपर बहुत देर से फोकस किया. Yes, अगर आप मेरे से पूछोगे कि उसमें कोई गलती रहेगी, what you regret something, yes, maybe मेरे को अब तक 3 माइक्रो निशेस बना देनी चाहिए. Maybe I should have 2 more this thing, ताकि जब कोविड आया तो मैं हिलता नहीं इतनी बुरी तरीके से. Right. But
having one micro niche was never a thing. अब जिस तरीके से काम वापस आ रहा है, every day मुझे खुद फोन आ रहे हैं, ये पहले कोविड से पहले भी नहीं, every day I'm getting one call from a big hotel chain कि let's do something. So the answer is when you starting up, start with a micro niche, and general agency बनाने के लिए भी multiple micro niches चाहिए होंगी. Learning curve ज्यादा हो जाता है, उनको कैसे respond करो, उनकी क्या, तो आदमी शुरू में बिखर जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन सी चीज समझूं. That's why I always पहले 4-5 क्लाइंट एक ही नीश के पकड़ के, so we understand them well, and also जब हम मार्केट में जाके उनको बोलेंगे ना, वो बोलेगा तुम्हारी क्या डिफरेंशिएशन है, वो बोलेगा सर I know your hotel business better than you do. अच्छा कैसे? Because I've already been doing all of this. So that's what my take on the micro niches. Does it become boring? Just curiosity. It becomes easy. Boring की जगह easy हो जाता है. Because the thing is कि like see मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ. I'm the coach, I'm not the captain. Captains के लिए थोड़ा शायद boring होता होगा, रोज वही काम कर रहे हैं. But I'm the coach. और मेरे पास I'm able to set up multiple streams of business only because I don't have to be in this business again and again and again. So that's very good question. Boring हो सकता है, but हर कस्टमर का अलग चैलेंज होता है. But you're able to see. अगर आप किसी भी चीज को असेंबली लाइन में ले आओ, जितना पास ले आओ असेंबली लाइन से, उतना ऑटोमेशन हो जाता है, फिर आप दूसरा काम कर सकते हो. बिस्किट बना रहे हो, माय डैड यूज्ड टू हैव अ बिस्किट फैक्ट्री. 4 टाइप के बिस्किट होते थे, एक नमकीन होता था, एक कुकी होता था, 2 टाइप के मीठे बिस्किट होते थे. तो उनका यही काम था कि वो कन्वेयर बेल्ट में आके फिक्स हो जाए, पैकिंग होके चले जाए. तो देन माय डैड कुड थिंक एक नया प्रोडक्ट कौन सा और बना सकते हैं. So that's my take on the whole thing. So I guess as an entrepreneur, it is very important to put up the system and then make sure that all the gears are working properly. आपको अपना टाइम सबसे पहले उसमें से निकालना है ना, और किसी और का टाइम उसमें लगाना है. Right. Yeah. Cool. Okay, so this is the last question, and this is I want to know about the future of agencies, and why I'm asking is that a lot of things are coming in nowadays. Earlier, a couple of years back, if you are a digital guru, that was enough, like you are the top of the line. But today, when blockchain is coming up, and changing the market dynamics, cryptocurrency is there, NFTs are coming, and people are still confused why people are buying these funny kind of images at such an expensive price. And AI is coming and transforming the way people think, people do copywriting, people do designing. All these things are coming and changing the dynamics of the commerce. Where do you see the future of agencies? The thing is, मैं हमेशा से एक चीज कहता हूँ कि जैसे चार्टर्ड अकाउंट, जैसे हर अच्छी कंपनी के पास एक अकाउंटेंट होता है, और बाहर उनका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है जो उनको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड टैक्सेस कैसे फाइल करने हैं और मार्केट में क्या हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो सिमिलरली जिस तरीके से मार्केट बदलती है, एवरीबॉडी विल हैव एन इन हाउस टीम, राइट, एंड दे विल आल्सो हैव एन एजेंसी. सो दोनों चीजें को एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि इन हाउस टीम मार्केट में क्या चल रहा है वो पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एजेंसी को पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरे क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, एंड बोथ ऑफ देम विल very happily coexist. But one thing that's going to happen is that the budgets are going to go up, because लोगों को ये बात समझ आ गई है कि 1 रुपए डाल के 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए इसमें आ सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे ई कॉमर्स की मार्केटिंग नहीं आती, बट अगर आप मुझे बोलोगे टी शर्ट बेचनी है 2000 रुपए, और मैं बोलूंगा कि मेरा फेसबुक एड कॉस्ट आ रहा है, मेरे को पर क्लिक 20 रुपीज आ रहा है, और 10 क्लिक्स के बाद मैं आपको एक क्वेरी देता हूँ, तो आपके पास 200 रुपए की क्वेरी आ रही है, और हर 10 क्वेरी के बाद एक कन्वर्जन होता है, तो 2000 के अंदर कन्वर्जन आ रहा है, तो ये ब्रेक इवन हो गया. तो आप बोलोगे कि ई कॉमर्स में नहीं, बट इफ यू हायर माई एजेंसी फॉर होटल्स और फॉर कोचिंग और ट्रिविया और फॉर रियल एस्टेट, जहाँ टिकट प्राइस हाई है, एक अपार्टमेंट है, आप रियल एस्टेट एजेंट हो, आपको उसको 3 लाख रुपए आपको मिलते हैं कमीशन. आई एम एबल टू गेट अ क्लाइंट फॉर 15,000 रुपीज, और 15,000 रुपीज में आपको प्रॉफिट बनता है. तो यू हैव टू सी कि मैं कौन सी फील्ड में एक्सपर्ट बनूं, जहां मेरे को, बिकॉज अगर हम बोले कि स्मॉल टिकट में अगर हम एक्सपर्ट बनते हैं तो 200 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, इसी के चक्कर में गूगल फेसबुक ऐड में एल्गोरिथम बन रहा, हमारी सारी मैथ्स गायब हो जाती है. सो there will always be work for agencies who will come and tell people 1 के 4 कैसे करते हैं. तो वो 1 के 4 करने का फॉर्मूला हमारे को आना चाहिए, एंड उसके लिए मेरे को इंडस्ट्री समझनी जरूरी है, एंड दोस पीपल विल ऑलवेज बी इन डिमांड. अब वो कैसे करो वो आपके ऊपर है. आप प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग से करो, आप कॉपी राइटिंग खुद लिखवाओ या किसी सॉफ्टवेयर से करवाओ,
या आप AI से करवाओ, I don't think the client is going to care about all of those things. वो हमारी एजेंसी साइड में हमारे को टूल्स हेल्प कर रहे हैं कि हम जल्दी कर सकते हैं. क्लाइंट कहता है टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट. Right. If I see, let's say for an example, a hypothetical situation. पहले क्या होता था कि पहले लोग प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर में ऐड करवानी है तो there were specific agencies. उन एजेंसी के पास जाते थे, एजेंसी वाले आपके ऑफिस में आते थे, फिर वो कोटेशन देते थे, उसके आपको ऑफर्स बताते थे, क्या बंडल डील है और दैट, उसके आप डील क्लोज करते. अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है. सडनली वो पूरा डिपार्टमेंट बहुत श्रिंक होकर छोटा सा हो गया, उनका खत्म नहीं हुआ, बहुत छोटा सा हो गया. काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन भी हो गई हैं, आपको किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं है. आप सिर्फ ऑनलाइन बुक करो, आपको वहाँ पे ऑफर मिलेगा, आप पे करो, खत्म स्टोरी. सो दैट एंटायर सेक्शन इज गॉन, completely disappeared. Similarly, if I talk about print media, it was a complete long process. I'm not getting deeper into it. Digital, when the ROI comes in, client want ROI because this is something which they can show to their CXOs कि मैंने इतना पैसा लगाया, इतना आउटपुट निकला मेरा. There is number to show, and that is why ROI driven marketing is so famous now. अगर कल को मैं कहता हूँ कि how possible you see the future कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा and the requirement of an agency will be very limited when everything can be done automatically. The copywriting can be done automatically. I choose my category. For example, if I choose my category, I am a guy who's selling t-shirt. So maybe Google or somebody like that will tell me, okay, or maybe for example, Facebook ads will say, okay, let me create a copy for you, let me create a visual for you, and this is the ad and this is the market you have, and you publish it. You don't need any digital marketer to do that, and completely automates the thing, which is happening also. Somewhat it is happening. But will it gonna completely we can get rid of agencies? Is that what you see? See, the thing is, दो टाइप की चीजें. One is standard product and the other is customized product. अगर standard product है जैसे वेबसाइट, तो वो तो wix.com जैसी बहुत सारी वेबसाइट है जिन्होंने ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया वो वाला बिजनेस. पहले आप वेबसाइट बनाते थे, 3 महीने का प्रोग्राम देते थे, ये होगा वो, पर लोगों ने देना शुरू कर दिया. So similarly, blogging services है, वो कहता है ब्लॉग नहीं है, ऑटोमेटेड सर्विसेज है, इन हाउस किसी को बता दूंगा, वो ब्लॉग का वो खुद ही सॉफ्टवेयर ले लेगा, इन हाउस बनाना शुरू कर देगा. एग्जैक्टली. इंडिविजुअल कुकी कटर एक सर्विस है, वो हमेशा जाएगी. जैसे मसाले भी आप ऑनलाइन मंगा लेते हो, पहले आप दुकान में जाते थे, जोमेटो से खाना भी मंगा लेते हो, लेकिन फिर भी घर की शेफ की जरूरत पड़ती है, फिर भी बावर्ची की जरूरत पड़ती है, फिर भी घर में मॉम डैड वगैरह सब खाना बनाते हैं. सो जब भी आपको किसी कस्टमाइज सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी टू पुट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, बिकॉज हर आदमी में इतना टाइम, पेशेंस और दिमाग लगाने के लिए टाइम नहीं होगा कि मैं दाल कैसे बनाऊं, सब्जी कैसे बनाऊं, पूरा मील कैसे बनाऊं, 4 लोग आ रहे हैं मेरे घर में आज रात को चाइनीज खाने के लिए, कैसे करूं. सारी चीजें मैं जोमेटो से नहीं कर सकता. कुछ चीजें मैं बना लूंगा, कुछ चीजें स्टिल दे विल बी कस्टम. सो जो कस्टम चीज होगी उसमें एजेंसी की जरूरत होगी, एंड दैट इज व्हाई एजेंसी का जो रोल है ज्यादा उस तरफ जाएगा एज अ कोच रादर देन अ कैप्टन, बिकॉज कोच सारी चीजें साथ में डाल सकता है. कैप्टन बोलेगा मैं तो वेब डिजाइन में एक्सपर्ट था या मैं पीपीटी में एक्सपर्ट था. सो दैट्स आई थिंक व्हाट्स गोना हैपन. ऑलराइट. Today, if I'm looking at digital marketing, it has a set structure. But very soon when the meta will come in and things will start becoming more, as again, I'll say AI driven and more virtual driven. What are the skills you feel that, what kind of a skills? One I can think of is that, VR, virtual reality is going to, go very high. What are the skills which digital marketers should focus on, which is the future technology? See, मेरे हिसाब से I think the biggest skill in any platform for a digital marketer is going to be getting known. चाहे वो metaverse हो, people who are known more will be the people who are approached more for any kind of business. Now, I can be known as a digital marketer or I can be known as an influencer. And then with using my influence, I can start a digital marketing agency or help somebody start an agency and I can be a third partner or a fourth partner. तो influence की गेम होगी जो जितना ज्यादा, तभी आप देख रहे हो इतने सारे क्रिएटर्स वगैरह ये काम कर रहे हैं. पहली बात, तीनों मार्केट अलग चलेगी. आज डिजिटल वर्ल्ड आ गया, लोग कहते हैं डिजिटल आएगा, सब लोग अपने फोन में घुसे रहते हैं, बट जब मिलते हैं हम लोग मिलते भी हैं. तो ऑफलाइन की अब ज्यादा मजा आ रहा है, लोग इवेंट्स पे जा रहे हैं, कोई शिमला जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, तो दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर रही है. अब तीनों चीजें को एग्जिस्ट कर रही है. कोई मेटावर्स के अंदर बैठा होगा चश्मा पहन के, कोई आपको घर पे डिनर कर रहा होगा, कुछ लोग इसी के अंदर घुसे होंगे. तो वो तीनों चीजें को एग्जिस्ट करेंगी.
बट एक मार्केटर को का जो काम होगा टू बी एबल टू गेट नोन वो बढ़ जाएगा, बिकॉज वो नए यूनिवर्स बनेंगे तो यहाँ जल्दी होगा टू गेट नोन, तो वहां भी गेट नोन। बिकॉज मान लीजिए अब इंस्टाग्राम पे आपके पास ज्यादा फॉलोअर्स है बट फेसबुक पे नहीं है, तो फेसबुक पे यू आर नॉट नोन, सो योर वर्क इज टू गेट मोर नोन ऑन फेसबुक। सो सेम वे विद द मेटावर्स, जहां होगा जितना, आई थिंक द पीपल विद द बिगेस्ट नेम्स विल हैव द बिगेस्ट लेवरेज। अदरवाइज फिर हम किसी और इन्फ्लुएंसर को पैसे देंगे हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करो। राइट। सी एजेंसीज विद, जैसे मेरे साथ है एक छोटी सी फॉलोइंग है, तो मेरी एजेंसी को बहुत हेल्प करती है, बट विदाउट अ फॉलोइंग मेरी एजेंसी वुड बी वेरी नॉर्मल। बहुत सारी चीजें, मेरा स्टाफ, मेरी हायरिंग, मेरे क्लाइंट, सारी चीजों को एक थोड़ा सा ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर स्टेटस की वजह से हेल्प करता है। Right. Will help in the metaverse. Fantastic. And that brings me to the last question. A very cliche one. But how important brand building is for agencies themselves? See, a brand for an agency is built by the case studies of the client. For example, एक तो हो गया हमारा पर्सनल ब्रांड, उसकी बातें तो हम लोग कर चुके हैं बहुत बार. What we talk about, okay, how good we are, what kind of work we are doing, putting your show reels and stuff. Yeah. The brand of an agency is, I work with Mr. Vikram, and Mr. Vikram is a big guy in this company. उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने उनको ऐसे, वो हमारे पास आए, हमने उनकी ऐसे मदद करी, and then this happened. Now I will use that video and run ads in all the people in the travel industry जो Mr. Vikram को जानते हैं, और वहाँ से मेरा ब्रांड बनेगा. Now, brand is not what I feel or say it is. It is what my existing client thinks. Yeah. What my existing client knows and what my new clients think. तो इसको पता है और इसको ये सोच रहा है कि क्या है, वो मेरा ब्रांड है. तो मैं खुद ब्रांड बनाने की कोशिश करूं, उससे बेस्ट ये होता है जिसके लिए मैंने जिंदगी में कुछ किया है, उसी की स्टोरीज को सोशल मीडिया पे फेसबुक ऐड करो, 10,000 रुपए, 20,000 रुपीज स्पेंड इट टू द सेम मार्केट. दे गेट टू नो, oh, Ajay's agency had this company. You are automatically a brand in front of those people. Yeah. I think testimonials, yes, definitely. Testimonials is a great idea, and it always works, at least in the agency, because we are into service industry. So we can only show the testimonials, which speaks for itself. And that too with detailed listing. 29th of October 2017, this person came to Ajay, and then Ajay realized that आपके अपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम थी. अजय ने मैंने पहले सर्वे किया, फिर मैंने सर्वे करने के बाद मैंने उनको बताया कि आपके जो 4 कंपेटिटर्स हैं, उनके अपार्टमेंट्स और आपके अपार्टमेंट में ये फर्क है. अगर हम ये छोटा सा फर्क दिखा दें, सो बाय द वे वी वेंट बिहाइंड द सीन्स एंड प्रोडक्ट को भी हमने इम्प्रूव किया. उसके बाद हमने सेकेंडली, तो पूरी जर्नी दिखाओगे तो वो आदमी जो आपको इंटरव्यू पे बुला के सारे क्वेश्चन पूछना चाहता था, उसके सारे क्वेश्चन यही आंसर हो गए. वो कहता है प्लीज कॉल अजय फॉर मीटिंग, आई वांट दिस गाय. सो दैट्स द वे टू बिल्ड अ ब्रांड ऑनलाइन. Lovely, fantastic. One more question. Sorry, that was the last one, but I'm just extending one more. You talked about people can do job and at the same time they can start their own agency. If you can just explain that, how if I'm working for an agency, I'm spending good 8 to 10 hours, maybe more, because agencies they have very hectic schedule. Where do I have time for setting up my own brand? If I'm not talking about how ethical or unethical it is right now, which is also a concern, but at the same time, how much time I should devote minimum for my new stuff? I would always say never do something which will spoil your personal brand. अगर वो ethical नहीं है और आपके बॉस या आपके पार्टनर या को-फाउंडर को लगता है कि नहीं आपको एक टाइम पे एक ही चीज करनी चाहिए, तो बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज मार्केट में नाम खराब होता है, बनना मुश्किल है. नंबर 1. So have a conversation and work it out. The other thing is, go to Fiverr.com, go to many of these other websites, get gigs. Do those gigs on the side. That's what I mean by doing two things. दो offline काम नहीं कर सकते. Okay. Yeah. So my same question was, I was working in a company before, and I spoke to people that, hey, I'm running a freelance business. Are you okay with that? And they said, actually, as long as you are not, you are finishing my work, I don't have any problem. Whatever you do in the weekends. So I had that conversation, and when I started Chili Factor. I started while I was running Chili Factor. I was working for different agencies, and I spoke to them. It was I was doing a freelance stuff there. I said that I am not your employee, but I am coming there on the regular basis, and it's a contract based job, if I may say.
and then I was working on my own brand. So I had maybe 4 to 6 hours there, and I was running my own show separately as well. And that is how I managed for a couple of years before I decided that I'll completely shift to this. Great idea, because the thing is, shifting into something new without the cash flow, without the understanding, is not a good idea. I think it's a very smart way of doing it. Perfect. I think that brings me to the end of this conversation. Thank you so much, Avi, for your wonderful experience, sharing the knowledge and clearing all the doubts. I'm sure all the people who are already into business and people who want to get into agency business, they're going to learn a lot from this book. Thank you, Ajay. Thank you for your time. I'm sure you and Chili Factor and your new Josh, introvert se extrovert bane, new mic, new background, new everything. There's nothing that, and your love for your family and kids, I know nothing is going to stop Chili Factor. All the best. God bless. Thank you. Thank you. That was Ajay Singh from Chili Factor. I hope you're enjoying this series where I am bringing in digital marketers, freelancers, entrepreneurs, जो बनना चाहते हैं digital marketers, and be able to answer their questions based on the experiences that I have, based on the mistakes that I made, so that they can take their life and business and their digital agency to the next level. Let me know in the comment box which are the 2 things that you learned from today's conversation. And don't forget that we have a contest going on. We have iPhones going out, we have OnePlus 8s going on, we have t-shirts, hoodies, something or the other coming out for the most engaged subscriber. So be an engaged subscriber, comment on the videos, and every month we're going to give an award, and hopefully you're going to be one of those people to win. Thank you very much. This is Avi Arya signing off. Don't forget to watch the next episode.